Dear student, welcome back to Dr. Srikanth Pharmacy channel. Myself Dr. Srikanth. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy videos. So today I came with a topic, size reduction, or also called as a comminution or diminution or pulverization. And this topic is very much important in examination. Always the more questions will be from the size reduction chapter. So in this class we are planned for the what are the size reduction, what are its definition, and what are the major advantages and major disadvantages with respect to the unit operations. Let me discuss the what is a size reduction. I am repeating: size reduction, comminution, diminution, pulverization, all words are same. So what is a size reduction? So size reduction is a process of reducing large solid unit mass into small unit masses. I shown in the figure, you see that the size of the granules or the size of the particle which are larger are there. These larger are converted into smaller unit masses, and again these smaller unit to coarser, and finally you are making the very fine particle. The reason behind this, the majority of the pharmaceutical products which are available in the irregular size and irregular shapes, and the size of the particles are very randomized. So during the formulation, what is necessary is that all the particle must have the uniform to get the good dosage form. So the pharmaceutical powders are polydisperse. Polydisperse is nothing but more than one form, more than one shape, more than one sizes. So hence it is difficult in the production of any type of the dosage form. Hence size reduction is very much important in the pharmaceutical field. Usually the size reduction are done by two methods. One we called as a precipitation method, another one we called as by using the mechanical method. So among this, the mechanical process are the most important and majorly operated in the nowadays present industry. Okay, what are the advantages of size reduction? What are the advantages of size reduction? First one is content uniformity. Content uniformity. If the particle are size reduced, then the mixing is more efficient. Okay, if the particle are size reduced and uniform sizes are there, so mixing will be more effective. If the particle size are uniform and small are there, the mixing efficiency will be more and the content uniformity will be more when you make into the different types of dosage form. Second advantages is that uniform flow. To get the uniform flow, smaller particle and controlled size distribution is very important. So that will increase us the uniformity of the flow. The flow of the powder into dyes is very much important. When you come across as the manufacturing of a tablet, these tablets will be compressed by using the granules. So granules will be passing from one place to another place to the dyes. At the time, if the granules are good flow property are there, uniform are there, then what happen, the tablet prepared, it will contains the good uniformity tablet dosage form. Hence the uniform flow of any particle is very important. Conveying of the one particle from one place to another place, in that condition the flow is very much important. If ununiform is there, small particle or large particle are there, so what happen, variation in the flow, hence the ununiformity of the dosage form will be formed. Effective extraction of solid. As the particle size is decreases, so what happens, the surface area increases. Automatically the rate of penetration is also increases, and ultimately the extraction process also increases. So that is why the smaller particle a rapid penetration, and that will leads to ultimately the rate of extraction. Next comes the effective drying. If you want to increase the drying rate, it is a very essential that the size of the particle must be uniform granular. So drying of a granular mass is more effective when compared to the ununiform or unrandomized particle sizes. And specifically the effective drying will be across when the particles are small and very uniform, and particularly the dosage form like a tablet or capsule dosage form, the drying is very much important. So if the granules are not properly dried, then what happen, the tablet or the tablets of the particular granules or the capsules of the particular granules will not be efficient.
Next comes the improved physical stability. Specifically, the dosage form like a suspension and emulsion, the size of the particle plays an important role. The sedimentation is mainly depend upon the size of particle. Smaller the particle, so lesser will be the size sedimentation, and hence the stability of the suspension will be increases. So the physical stability of specifically the suspension is much better if you have the particle size is a smaller size. If the larger size is there, then the sedimentation will be more because of the density. So upon the size reduction, what happen, the size will be reduces and it increases the stability of your product. Improved the dissolution rate. The majority of the drug will be increased its dissolution rate by the size reduction, because as the size reduction takes place, the surface area will be increases and automatically the dissolution profile also increases. So take an example, griseofulvin as one drug. Upon size reduction, its dissolution profile will be increases when compared to the normal conditions of the griseofulvin. Improved the rate of absorption. So always you remember, smaller the particle, so faster will be absorption. So faster will be absorption will come across only when if you have the faster the dissolution. Hence the smaller particle, faster will be the dissolution and faster will be the absorption. So hence the absorption is faster, so bioavailability will be faster, and all the pharmacological and all the pharmacokinetic profile will be increases. So take an example which is commonly, which will improve the rate of absorption upon the size reduction is a chloramphenicol. Next comes the disadvantages of a size reduction. So some are the disadvantages with upon the size reduction. The first disadvantage is that drug degradation. So during size reduction, heat will be produces the milling equipments. So what happened due to heat, so if the drug is thermoliable are there, so it will be degrade its quality. So hence the size reduction, whenever the processing with the mechanical process, there is a possibility that so heat will be producing in that. So when you are milling any of the product, so heat will be produced, that heat maybe leads to the degradation of the product. Poor mixing, you remember very clearly, very small particle always it increases its cohesiveness forces. So hence what happen, aggregation is more towards the joining of the particle. So that is why the poor mixing will be across us. Contamination is another drawback with the size reduction. Upon the size reduction of the very fine particle, the particle will blow into the area, and that become as a contamination to the particular area or the particular part. So hence these are the major disadvantages of the size reduction. One is a degradation, second is poor mixing, and third is a contamination. Student, आज का क्लास ये ले लिया हम लोग, साइज रिडक्शन और कम्बिनेशन और डिमिनेशन पोलराइजेशन बोलते हैं. साइज रिडक्शन मतलब क्या है, बड़ा साइज पार्टिकल्स को छोटा साइज बनाते हैं ना, उसको साइज रिडक्शन बोलते हैं. सो जैसे मैं समझा रहा हूँ, इधर फिगर जो बता रहा हूँ, ये जो लार्ज पार्टिकल है ना, इससे स्मॉल पार्टिकल बन रहा है अपॉन द साइज रिडक्शन, और इससे भी स्मॉल बनाना, इससे भी स्मॉल बनाए तो उसको जो प्रोसेस बोलते हैं ना, साइज रिडक्शन बोलते हैं. ये जो साइज रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फार्मास्यूटिकल फील्ड में, बिकॉज कौन सा भी हम लोग डोसेज फॉर्म बनाना बोले तो साइज रिडक्शन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल. बिकॉज जो भी ड्रग जो मिलता है ना, डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स विल भी रहने से क्या हो जाता है, आपका डोसेज फॉर्म यूनिफॉर्म और अच्छा लगना बोले तो साइज रिडक्शन इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन? जैसे अदर टाइप्स ऑफ यूनिट ऑपरेशन, साइज रिडक्शन भी मोर इम्पॉर्टेंट रहता है फार्मास्यूटिकल फील्ड. पहली बात तो ये है कंटेंट इन्फॉर्मेटिव. अगर अच्छा साइज रिडक्शन, सेम यूनिफॉर्म साइज, स्मॉलर पार्टिकल आर देयर, मिक्सिंग उनका जो एफिशिएंसी रहता है ना, बहुत बढ़िया रहता है. और यूनिफॉर्मिटी फ्लो, सो स्मॉलर द पार्टिकल एंड कंट्रोल्ड साइज रहे तो द फ्लो विल बी गुड, एंड द व्हाट हैपन व्हेन यू आर कम अक्रॉस द कंप्रेशन ऑफ द टैबलेट, इट विल बी बेस्ट. इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग, जैसे छोटा छोटा पार्टिकल होता है, द मेनिस्ट्रम और सॉल्वेंट पेनिट्रेशन विल बी मोर हो जाता है, द ड्रग एक्सट्रैक्शन विल बी फास्टर. सो दैट इज वाई इट इज बहुत ज़रूरी रहता है. अगर एक्सट्रैक्शन हमको अच्छा आना बोले तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा रहे तो आपको अच्छा आता है. इफेक्टिव ड्राइंग,
पर्टिकुलरली टैबलेट और कैप्सूल में ग्रैन्युल जो बनता है ना, वो ग्रैन्युलर को ड्राइंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ड्राइंग ऑफ ग्रैन्युलर मोस इज़ इफेक्टिव। ये ड्राइंग कब अच्छा रहता है बोले तो पार्टिकल साइज स्मॉल और यूनिफॉर्म रहे तो आपको ड्राइंग अच्छा रहता है। इम्प्रूव्ड फिजिकल स्टेबिलिटी, जैसे सस्पेंशन है, एमल्शंस है, इन दोनों में पार्टिकल साइज इज प्लेस है ना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पार्टिकल जितना छोटा होता है सेडिमेंटेशन उतना कम रहता है, पार्टिकल अगर बड़ा रहे तो सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इम्प्रूव द डिसोल्यूशन रेट। सो साइज रिडक्शन से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाता है। ये एग्जांपल ग्रेसोफिल्विन है, ये जो ड्रग उसका जो साइज रिडक्शन कर दिया तो आपका साइज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उसके साथ भी डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इम्प्रूव द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। सो स्मॉलर, जितना पार्टिकल स्मॉल रहता है उतना फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है। सो उससे एक एग्जांपल है क्लोरामफेनिकल। सम आर द डिसएडवांटेजेस साइज रिडक्शन, ड्रग डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब ड्रग खराब हो जाता है। क्योंकि ले बोले तो जैसे ही हम लोग जो भी साइज रिडक्शन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे हीट पैदा होता है इक्विपमेंट रन होने से बाद, उससे क्या हो जाता है, अगर थर्मोलायबल सब्सटेंट रहे तो वो डिग्रेड हो जाता है। और एक क्या है, पूर मिक्सिंग है। यहाँ पे साइज रिडक्शन भी होना, इतना होना ऑप्टिमम रहना, बहुत ही छोटा बन गए तो क्या हो जाता है, उसका कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होता, फिर पार्टिकल एग्रीगेशन होने का चांसेस रहता है। कंटामिनेशन, जैसे वेरी फाइन पार्टिकल बनाते हैं ना साइज रिडक्शन में, वो क्या हो जाता है, जो भी पार्टिकल रहता है ना वो पाउडर फॉर्म होकर ब्लो हो जाता है, उससे कंटामिनेशन होता है। स्टूडेंट, ये क्लास से आपको सरल से समझ में आया, साइज रिडक्शन बोले तो भी क्या है, कम्बिनेशन बोले तो क्या, डिमिनेशन बोले तो क्या, पोलराइजेशन, सभी वर्ड सेम ही रहता है। उसका जो हम लोग डेफिनेशन लिया, उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट क्लास विथ द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।